हाय। ये हमारा पाइथन सीरीज के अंदर फर्स्ट लेक्चर है और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए पाइथन के अंदर कंसोल के ऊपर कुछ भी आउटपुट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट फंक्शन को लिखना होगा। प्रिंट आगे पैरेंथेसिस प्रिंट फंक्शन और इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा कंसोल के ऊपर आउटपुट हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आउटपुट हो गया है, इसी तरह से हम यहाँ पे कोई नंबर्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। जिस तरह से 3, जिस तरह से हम कोई नंबर्स के ऊपर मैथमेटिक्स का फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं और बस एक स्ट्रिंग के साथ हम कॉमा लगा के एक अनदर स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं। तो वो दोनों स्ट्रिंग्स हमें एक साथ रिजल्ट के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर दिख जाएंगे। तो हमने अभी देखा प्रिंट फंक्शन को और अब हम प्रिंट फंक्शन के बाद हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो डाटा जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर लेटर यूज़ करेंगे। तो पाइथन के अंदर हम पाइथन रिक्वायर नहीं करती एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स का, जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर हमारे पास 4 डाटा टाइप्स होती हैं, जिनके अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट and boolean. So what is string, what is integer, what is float and what is boolean? These are basically the type of data you will be storing in the variables. So variables के अंदर हम इन में से चार में से किसी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। For example, what is a string? So before let me make a variable name with a name, okay? So हम इसके बाद assignment operator का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। सो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू जो होती है वो लिखी जाती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और हम नेम यहाँ पे दे देते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, एनी सेंटेंस इज अ स्ट्रिंग। उसके बाद व्हाट इज एन इंटीजर? You must be familiar with integers in mathematics. Integers are basically anything ranging from 0, 1, 2, 3 to infinity and to negative -1, -2, -3 without any precision point or without any floating point or a decimal point. So let me just make an integer age and let me just write 12 in the age. And now let me just make a floating point number. So before making a floating point number, let me just tell you, floating point numbers are any integers with a decimal point. So let me just say height, and height is 5.10. So this name, this age, and this height, these are variables, and these variables are storing some data of some certain data types. In other programming languages, if we have to make a variable name and we want to make this variable as a string, we have to explicitly write string before the variable name. But in Python, it does not require an explicit uh, writing of the data type. So
In Python, you can just write the string, you can just write the variable and just write the data type, just write the data according to the data type. Sorry. And your Python interpreter will know कि आप कौन सा data को use कर रही हैं. So let's move on forward to the next topic. So sorry, we have to discuss what is a Boolean. So let me just say a Boolean is anything which can have either a true value or a false value. It can either be true or it can either be a false. So let me just say fan, and it can either be on or it can either be off. So for on we use true, and for off we use false. So fan and bulb, these two are Boolean data types. So we can use any variable, and those variables can have only two values, either true or either false. This is the concept of variables in Python. And now we can see how can we print these variables in Python. This is a string. This is an integer. This is a floating point number, a float. This is Boolean. These two are Boolean. These are the variables, and these variables are storing data according to some data types: string, float, integer, and Boolean. Let me just print these data types. If I write print and write the names of these variables, like name, and then comma, and then age, and then comma, and then height, and then comma, and then fan, and then bulb. And if I run my code now, it will give me the name Bob Wilson, it will give me Bob's age, Bob's height, and then it will give me the values of fan and bulb, which are true or false. So this is how print work in Python. And let me just make it a little more understandable. Name, comma. This name will be printed as it is. Let me just show you what I mean. So name Bob Wilson, and after the value of name, we can make another string inside the print function and write age. So this age will be printed as it is after here, and then the value of age, which is this one, it will be printed. So name Bob Wilson, age 12, and then we can write height. Okay, so let me just run it. Name Bob Wilson, age 12, height 5.1, fan true, bulb false, fan is on, bulb is off. Okay, so these are how variables work in Python, and this is how we declare the variables and we get the values from the variables. So let me just move forward to the data types. Let me just tell you more about the data types. So how do we know that this variable name has a value of Bob Wilson, and this value Bob Wilson is of data type string? How do we actually know that? So let me just make a print function, and inside the print function, let me just use our type function. Sorry, let me just use a type function, and inside the type function,
we will, yes, and inside the type function, we will just write the variable name, and if I just run it, it will tell me this string, this variable name, which is a string, is of class string. And let me just check this height, this variable height. So this variable height is a float. You can already see this variable height has a floating point value. So this is a float. So we can check any data type through this way: print type and the name of the variable. So let me just move forward to comments. What are comments? Comments क्या होते हैं? Comments are basically anything which are there to explain your code. और ये कमेंट्स पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, यानी द कमेंट्स are not the part of the code. These are used by the programmers to give feedback or write memorable notes for the future. So basically, how do we write comments? Basically, if I wrote a print statement here and I write 2 plus 2, and then I can add a comment here. Okay. And if I run it, I will get only 4. This line will not get executed because I use a hashtag symbol before it. So anything written after a hashtag symbol will be a comment. So this is a single line comment. And if I want to write multiple line comments, what I will do is I will use, sorry, yes, this is a comment, and if I run it, I will still get 4 because this is a multi-line comment. I can basically just go to another line and write something, and it will be ignored by our Python interpreter. So I'm only getting the result as 4. You can either use these 3 symbols, or you can use three inverted commas instead of single line commas. This is also a comment. It's a multiple line comments, and to use a single line comment, we use a hashtag symbol like this. This is a comment. So comments get ignored by the Python interpreter. These are just used to write feedbacks or memorable notes for the future. So this is it for today's lecture. In the next lecture, we will discuss how to get user input.